I will tell you this कि ये सीक्रेट था बट अब तो मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है. बट आई विल टेल यू दिस Okay, सीक्रेट. व्हाट that's हैपेंड इन great. कॉलेज लाइफ. मैं जैसे कहीं घूमने जाता था ना, लाइक एक दिन में है कहीं 2-3 जगह नई जगह घूमने गया. सो आई यूज्ड टू क्लिक फोटोज एंड वो गैलरी में सेव हो जाती थी. एंड मैं बाद में 3-4 दिन बाद स्टोरीज डालता दिखाने के लिए कि आज मैं यहाँ गया था, कल मैं यहाँ गया था और परसों मैं आ गया. मैं तीनों दिन घूम रहा हूँ. The friends that I have in the college, isn't it? They often say this, that the LinkedIn profiles of the alumni, especially the LinkedIn profile of you, the profile People that you like have, you make us feel it creates- inferior. it creates more of depression rather than creating a sense of inspiration in Yes, us. yes. They're like, we feel In some a manner, sense yes. of depression in ourselves that we haven't done anything. Isn't it? For example, Utkarsh has done this, or some other Deloitte person has and done all that. this, but where are we? Yes, We yes. are just sitting at home watching Netflix, doing something or the other, whatever it is. Scrolling through LinkedIn We haven't done and anything. seeing his profile. He's winning competitions and all. Yes. Can make any person inferior. When I started LinkedIn या Instagram, तब मेरे को भी यही सेम चीज लगती थी, लिटरली सेम चीज लगती थी कि ये इतना कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ. बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप LinkedIn खोलो ना, देयर आर पोस्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, XYZ कर लिया, ये कर लिया. I'm delighted to announce that हाँ I हाँ, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट, टू बी मोर स्पेसिफिक. हाँ, तो वो बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कराता है अल्टीमेटली. मेरे को बहुत बहुत शाइनेस होती थी कुछ बोलने में कि बिकॉज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द थॉट कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये बोल दिया, बाय चांस ये आइडिया बहुत ही बेसिक लगा तो दे वुड थिंक कि मेरे को कुछ आता नहीं है. ठीक है, सो आई ट्राइड कि ये वाली पर्टिकुलर चीज को मैं ओवरकम करूं व्हेन कॉलेज वाज इन ऑफलाइन में. तो अल्टीमेटली इट वाज अ सडन शिफ्ट. आई वुड से कि वो 360 डिग्री शिफ्ट था इन माय माइंडसेट. There also lies a paradox, right? There also lies a paradox that if you want an internship, you must have a skill. But in order to have a skill, you must have an internship. Agree. So how to solve that paradox? That is a very famous paradox. A very warm welcome to the fresh episode of the Transforming Tape, where we transform perspective one tape at a time. And for today, we have a very special guest, Utkarsh Kushwaha, who is an alumni of Shahid Bhagat Singh College. And currently, he is working as an audit assistant at Deloitte India. And so for the ones who don't know Utkarsh yet, he was a senior in our college, and today we have got this honors opportunity to host him here at TTP. तो एज ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं कि इंटर्नशिप कैसे लेनी है आगे, अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज में MBA करना है नहीं करना. इवन बाकियों की जब हम प्रोफाइल देखते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, काफी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है. और कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ना है, स्पेशली इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू कॉर्पोरेट लाइफ, उस सबको कैसे हैंडल करना है. उन सब सवालों के आज जवाब हमारे गेस्ट उत्कर्ष कुशवाहा ने इस एपिसोड में दिए हैं. तो अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए जो कि ऑब्वियसली आपके मन में भी आते होंगे, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू, बोथ आयुष एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टिक टिल द एंड थ्रू दिस एपिसोड टू गेट आंसर्स टू ऑल दोस क्वेश्चन ऑफ योर्स. Welcome, Utkarsh. First of all, a very warm welcome to you, the Transformation Tapes. Thank you Hi, so much. Thanks for coming to our podcast as a guest. We are really excited to host you. Thank you So- so much, Sujal. Thank you so much, Ayush, for the invitation. I'm looking forward to this podcast. Yes. So after so many of us, we finally got Mr. Utkarsh Kushwaha to invite to our Transformation Tapes. So yes, was eagerly looking for this episode. To start on with this episode. So to start, first of all, how are you feeling today? How's the day been throughout today? My day has been pretty exciting and tough as well. I am into a corporate job as of now. I'm an audit assistant at one of the big fours. So it has been hectic, but it's exciting. I'm excited for this podcast. Obviously, I understand, man. How does the corporate life of a person go, especially after passing out as an undergraduate from a certain college? So yes, there was one thing that was constantly revolving around in my mind, like in the college time, isn't it? So first of all, for our audience who is listening to us, in order to tell them who doesn't know our guest, today's guest, so he was our senior at the college. He was 2 years senior to us, and in the college he was the person whom everyone was looking out to. So he was that famous personality in that college, right? If you want to ask something or ask someone about academics, about studies, it's Mr. Utkarsh Kushwaha. Mhm. If you want to ask something about society, it's Mr. Utkarsh Kushwaha.
So he was that quite famous personality in the college. So how does it Even feel now, when you are yes, so yes. famous in the college, right? How what feeling does it actually give you while you are were there in the college? Because we were with you only for 1 year because you were 2 years Mm, senior to us. After that, you passed out. But this must have continued for at least 2 years, right? From when you were in the second year. So how did it feel for all those years? mm, Thank you so much for your kind and warm words, firstly. So, what happened? Like, it did feel very good in the later stages of college because what happened in the first 1.5 year, the college was online due to COVID. Oh, So, I yes, yes, did not get that much time and that much aura to shine, like to show myself. Like, I did not participate in any of the competition in the first half of the college. So, but as and when I entered college in the offline mode, like I thought, ki meko, like it's now or never. Because yes. ultimately what was in my mind, because school में I was an average kid, ठीक है. College का 1.5 year बीता, I was not, मतलब I was not very keen to do things. मतलब जैसे मैं सोसाइटी में काफी सारी सोसाइटीज में था एज अ मेंबर, तभी मैं टॉप फोर में अल्टीमेटली गया. बिकॉज था क्या, इन बैक ऑफ माई माइंड, आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन. ठीक है, मतलब होता क्या था, आई टेल यू वन इंसिडेंट, उससे आप आइडेंटिफाई करना कि मैं कितना शाय था. व्हाट यूज्ड टू हैपन इन मीटिंग्स, यूजुअली मीटिंग्स में क्या होता है कि आप जो टॉप फोर है वो आपसे आइडियाज मांगते हैं. जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपसे आइडियाज मांगते हैं कि mm, आप आइडियाज बताओ या एटलीस्ट बोलो. द फर्स्ट थिंग इज द कॉन्वर्सेशन. So what I used to do, I was all when it was in the online mode, I always used to say कि मेरा mic खराब है, मेरा कैमरा नहीं चल रहा. I always used to make reasons like That's that because मेरे को, all the biggest excuse everyone gives. yeah, because मेरे को बहुत बहुत शाइनेस होती थी कुछ बोलने में कि, बिकॉज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ mm, द थॉट कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये बोल दिया और बाई चांस की आइडिया बहुत ही बेसिक लगा, तो दे वुड थिंक कि मेरे को कुछ आता नहीं है. ठीक है, सो आई ट्राइड कि ये वाली पर्टिकुलर चीज को मैं ओवरकम करूं व्हेन कॉलेज वाज इन ऑफलाइन में. तो अल्टीमेटली इट वाज अ mm. सडन शिफ्ट, आई वुड से कि वो 360 डिग्री शिफ्ट था इन माय माइंडसेट. Yes, yes. I think that was really a great answer. Also, Utkarsh, one thing I would like to know: what quality, according to you, you have, or what that inner thing you have, which allowed you to be a separate thing from others, which allowed you to raise higher from, let's say, an average college student. So, what was there inside you? I'll tell you one thing. So, according to me, I have one psychology. I have this one rule. I don't remember in which book I read this particular thing, but the thing is, as humans, we have feelings, and if we have feelings, we are bound to have some or the other sort of regrets. There is no person on planet Earth because who can say that I do not have any regrets, no matter how small it is. If we have feelings, if we are humans, we Mm, will have regrets, either small or either large. So I had this one rule when I entered college in the offline mode. No matter how many regrets I have, the memories I will make in my college life should be greater than the regrets. So the equation that I had is memories greater than regrets. If I have this equation at the end of my college life was successful. So I There tried to was follow this mantra, and I think I'm successful by that measurement. mhm. there was one LinkedIn post as well. I think that you shared Yes, regarding yes. this, right? Recently. Yes, Because exactly. that makes these Mhm, lines make me recollect that LinkedIn post of yours, right? Because Yes, you quite regularly post on LinkedIn, right? yes, mhm, Yes, so that made me recollect of that thing. So as you just told about the society stuff, wherein at the time wherein you was just as a member in the society, right? You were afraid of speaking out, like you had too much doubts in yourself, right? What sort of idea may I give and all those things. Like by now, I am also a head in one of the societies, isn't it? So often the members do complain that what happens is these sponsorship tasks that societies give, they are too hectic, they are too irritating. Like for example, you have to bring in these many fake Gmail IDs, you will have to create fake Gmail IDs, you will have to sign up and all those things and all those things. So at that time, when you mm. were a member, because I have also served under you as a member in TEDx, right? So obviously it was our job to follow all of your instructions and do the sponsorship tasks and all. But when you were as a member, right? How irritating did it even feel irritating to you to do the sponsorship tasks and all those things? at first it felt irritating, and the task is irritating no Mm, matter whether you are the top core, you are the middle core member, or you're just a member. But ultimately we have to do it for the sake of sponsorships. We can't deny mhm, that, because
अल्टीमेटली बी वेरी श्योर कॉलेज से इतना पैसा मिलेगा नहीं, वी आर वेरी श्योर, तो हमें खुद की फंडिंग, मेजोरिटी ऑफ द फंडिंग वी हैव टू डू इट बाय आवरसेल्फ। और आरसेल से ऐसा नहीं है कि मेंबर से 100 रुपए फॉर रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज कर सकते हैं। सो द ओनली मेथड या सोल्यूशन दैट वी हैव इज कि साइन अप्स लाओ जितने ज्यादा पॉसिबल हो। ठीक है। सो एट फर्स्ट एज अ मेंबर आई फेल्ट इरिटेटिंग, आई फेल्ट लाइक लीविंग द सोसाइटीज, कि मेरे को बताया गया था मेरा यहाँ ये डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगा, और यहाँ पे ये हर, एंड दिस वाज इक्विवेलेंट इन एवरी सोसाइटी, ऐसा नहीं कोई एक सोसाइटी करा रही है दूसरी नहीं करा रही। सो वो सब में करा रहे थे। सो आई थॉट ऑफ लीविंग द सोसाइटीज एट वंस, कि मतलब मेरे को ऐसा लगा था, बिकॉज अल्टीमेटली देयर वर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब एट दैट टाइम, कि मतलब अभी भी है कि सोसाइटीज बेकार होती है, टॉक्सिक होती हैं, और लिंक्डइन एज वेल पीपल राइट कि सोसाइटीज ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, एंड दे माइट बी राइट अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। बट इनिशियली मेरे को इरिटेटिंग लगा, बट व्हेन आई अल्टीमेटली परसिस्टेड विद इट एंड आई बिकेम द मिडिल कोर मेंबर, देन आई थॉट कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी को अगर फंक्शन करना है तो उसे फंड्स चाहिए। ठीक है। दो एट द जूनियर मोस्ट लेवल हम उस लेंस के थ्रू नहीं देख पाते हैं, बट व्हेन यू आर द मिडिल कोर मेंबर आप दूसरे लेंस से देखते हो चीजों को, एंड व्हेन यू आर द टॉप कोर मेंबर आप दूसरे लेंस से देखते हो। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, 1 year was frustrating, but ultimately when I ventured into a new role, the middle core member, so I started to look at it from a different lens। ठीक है। तो from that वो बहुत जरूरी है, लाइक वो वाली पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी एपिसोड ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स का टैगलाइन भी यही है, ट्रांसफॉर्मिंग पर्सपेक्टिव्स, सो द हाँ चेंजिंग द लेंस विद विच वी सी, तो वो बहुत जरूरी है एक चीज है। काफी सही है वो भी। So, Utkarsh, do you really think that being a part of many societies, I think you were president as well of one of the society. So, do you really think that has helped you in where you are right now? Has made any significant contribution? और ऐसी था मतलब ज्यादा खास नहीं था. According to you, that was a time pass. No, I would not say it was a time pass. Ultimately, I would say one thing: no matter if you are a part of one society, yeah, multiple societies, 3, 4, 5 societies, give your best. Give your 100%. Try to reach the top 1% of 2% of that of the number of people there are in your society. So what my motive was, like I forgot the question. What was the question? Yeah, I Question was a was part of like, as you are, आप काफी society के part थे जैसे. So, do you really think that had a significant contribution in your personal growth and all? Got it. So as I said, Hmm. I went into college. Ultimately, you also know कि academics कितनी होती है. Academics are very important, but उतनी difficult नहीं होती. From the perspective of a college level, एक bachelor's की degree इतनी मुश्किल नहीं होती from study perspective. So what my motive was to participate in as many societies as possible, and I'll take you back to my previous answer just for the memories. उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. That is helping in my corporate career as well. But उससे भी ज्यादा आई वेंट इन फॉर मेमोरीज। अलग अलग सोसाइटीज में Memories, yes, अलग yes. अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, अलग अलग मेमोरीज बनेंगे, रादर देन कोई कुछ नया सीखने के लिए। बिकॉज मोर और लेस आप मानो चाहे ना मानो, एक सोसाइटीज में इक्विवेलेंट काम होता है। इक्विवेलेंट काम इन टर्म्स ऑफ मोर, और आप वही स्किल सेट्स जो एक सोसाइटी में सीखोगे वही आप दूसरे में सीखोगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। What matters is कि आपको कितने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में। सो आई ट्राइड पॉन्डरिंग अपॉन कि मतलब मेरे को जितने ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिल सके। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस की पार्टिसिपेटिंग इन एज मेनी सोसाइटीज एज पॉसिबल। एंड कनेक्शन बनाना भी कॉलेज में काफी जरूरी चीज है ना, जो सोसाइटी से मिल बन सकती है। वो आना काफी डायरेक्टली हाँ, कहो तो. if I were to share how I met Ayush, right? Right now we are on a mission of, not a mission I would say, but we have forayed into The this initiative. podcast series, the transformation day. But I am very grateful of how I met Ayush. Let me tell you the story and our audience as well. Sure. Although our guest is Utkarsh Kushwaha, but I would like to share my story as well out Please, there. please. Yes. So what happened was, there was a marathon competition in Hindu college, isn't it? And there was our common group, BCom honors group, wherein Ayush just posted a message: whosoever wants to come in a marathon, just kindly DM me. Join. And at that time, I used to play cricket professionally. So I was quite very interested in running marathons and doing any sort of physical activity, isn't it? So I messaged him. From there, we met at Hindu college. We participated in marathon, isn't it? It's a different thing whether we got any position as or not, because we didn't to talk about frankly. So we didn't get any position, we didn't win. But yes, I met with him there at Hindu Yes, College for yes. the first time, and from there we became very good We are friends. just having conversation. And now We are. here we are at the transformation tips where we are having conversations. So Yes, yes, yes.
society is a very good platform from where you can connect with other people, and that is something which is Mhm. most important. And from your perspective, to make out memories in college more than having regrets. तो हाँ True. ये काफी अच्छी Because चीज है. as it is said in the word ki network is your real net worth, and that is very true. Mhm. Very, very true. Have you had any friend that has helped you as well? Majorly helped you या फिर काफी ज्यादा मदद करी है इन चीजों में related to career and all? Got it. Like Like Susan I and have a me, we are just helping each other in improving communication skill and true, all. true. So I have a senior named Suyash Jaiswal. You might be also aware of that name. I ये think Because सुना I नहीं have नहीं नहीं. heard his name. I have heard his name. Suyash हम्म, Jaiswal. yeah, I he think was my recently I senior. heard. So ultimately तुम लोग कभी मिले नहीं होंगे. So हमने No, he बोली was तो. I think I have heard his name somewhere, maybe on हम्म, LinkedIn or, but I didn't don't remember him properly. he was the best boy student of the year. Then I हम्म, was like his junior. So I aim to achieve his standard. I aim to achieve that status. So he helped me a lot throughout college, like initially from my first year of college. So but as and when I told you, like I was not able to speak, he was a part of that society. He was a top core member at हम्म, that point of time of a particular society. So he called me up. What happened, kya ho gaya, and वगैरह. And we had a 1.5 hour long call for that very first हम्म, conversation. बाद में personally. So I came to know that he's from Kanpur and I'm from Lucknow. हम्म, So Oh, that built connection. He's from ICSC board, and even I am from ICSC. So there are very rare people who are from ICSC in Delhi University. हम्म, So that built a unique connection. And उसके बाद धीरे धीरे बातें start हुई. He told me his experiences, and I could relate to his experiences. कि initially उन्होंने भी कैसे start किया. So that was similar. तो फिर धीरे हम्म, धीरे he motivated me. He like sort of paved a path for me कि ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो. And ultimately up till now वो Deloitte में भी हैं. So he's my senior. ओ, तो कुछ भी हम्म, इंटरव्यूज वगैरह थे एंड एप्टीट्यूड टेस्ट था जस्ट बिफोर डेलॉइट. उन्होंने मेरे से लाइक मैंने उनसे उनसे पूछा, उनसे हेल्प मांगी, एंड ही वाज ऑलवेज हम्म, देयर टू हेल्प मी. सो ही इज वन पर्सन आई ऑलवेज लुक अप टू नाउ एंड आई गेस फॉर एवर. पहले भी, नाउ एंड फॉर एवर. सही है काफी. तो क्या पता आगे कोई हम अगर किसी और पॉडकास्ट में हम जाएं तो हमें कोई पूछे तो हम आपका एग्जांपल दें. He was our senior Utkarsh. We had a He's senior also placed Utkarsh. in Deloitte and all those things. So yes, हम्म, it keeps on coming back, right? True. That is that is one Agree. thing. So yes. Now moving on to a bit of a formal side, like college life is totally different from corporate life. Obviously, that is quite very implicit. So True. obviously, you were an undergraduate student, obviously till the third year, and you were quite famous in the college. So how was that change in your life when you actually started working into that corporate sector? Because right now, to tell our audience, you are placed in Deloitte, right? You are Hmm. placed in Deloitte, and now right now you are living in Gurgaon, to serve your corporate stuff and all those things. So how has your life sharply changed from that college student to a corporate employee? हम्म, So college student is more of that free mind student, that free bird who has no cage, who has no rules, no limits and stuff. You can sleep at 2 a.m. and wake up at 6 a.m. and go to college. You cannot sleep all night and then even go to college. You can take absence at your pleasure. But हम्म, this is completely different from corporate life. Here you have limits. Here you have deadlines. Here you need to ask the person that if you can take the leave or not. So these are हम्म, some of the basics that changes. But more or less, I would say कि discipline is for the good. So corporate in the initial phases teaches you discipline, teaches you routine, to go to bed at night in proper time, to wake up early, to do हम्म, your tasks, to do your course, to do your stuff. So that is the thing. So I would say कि थोड़े बहुत changes रहते हैं, but ultimately it is for the good. मतलब because if you feel कि initially जब आप corporate में आओगे तो आपको uncomfortable feel होगा. And हम्म, if you are feeling uncomfortable, तो समझ लेना that you are growing. So, for चल, example, for any third year student who is listening to us right now to this podcast, and he has got a package in a certain company, right? So, what are the tips, 2 to 3 tips, if you were to give to that person who is listening right now to our podcast, to the things that Ease the his changes he corporate must life. bring in himself हम्म, to shift from his college life to his corporate life? Got What it. are the 2 to 3 So things that got it. Two yes, to three tips that I would give. Firstly, if you are in the third year, enjoy your college life to the fullest. एक हम्म, एक्स्ट्रा इंटर्नशिप या एक एक्स्ट्रा
कुछ वर्क डोमेन या एकेडमिक्स में करने से अच्छा है एक ट्रिप पे जाओ, एक एक्स्ट्रा ट्रिप पे जाओ, एक एक्स्ट्रा कॉन्सर्ट पे जाओ, वो एक वो सबसे एक्स्ट्रा मुश्किल होता है। हाउस सबसे पार्टी मुश्किल ट्रिप है। तो सही बात दैट है। आई अग्री, बट जितने ज्यादा मेमोरीज बना सकते हो दोज द पीपल हु आर इन योर थर्ड ईयर, उतनी ज्यादा बनाओ, हम्म, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज वन ऑफ द गोल्डन फेजेस ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट डिनाई, किसी का भी कॉलेज लाइफ का फेज हो, सही। लिव इट टू द फुलेस्ट। एंड व्हेन यू वेंचर इनटू द कॉर्पोरेट, तो सबसे पहली चीज तुम्हें डिसिप्लिन हम्म, करना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज में मेजोरिटी लोग डिसिप्लिन नहीं रहते, एंड वी आर ओके विद इट, बट यहाँ पे आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नई टाइम पे सो रहे, नई टाइम पे काम दे रहे हो, तो कॉर्पोरेट्स को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू रिप्लेस यू। आप एक जाओगे तो हजार हैं उनके हम्म, पास ऑलरेडी। तो यू नीड टू बी एट योर टोज, मतलब ऑल द टाइम अलर्ट रहना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन। इन शॉर्ट, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कॉर्पोरेट में आने के लिए, बिकॉज आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आई हैव माय फ्रेंड हु गोज टू ऑफिस एट 7 a.m. and comes हम्म, back at 10 a.m., 10 p.m. due to busy एनपीए। season. Obviously, these 3 to 4 months were सही बात। financial months, prior to हम्म, financial months, तो थोड़े से busy रहते हैं, but 12 to 13 hours of work, ये अगर यस आप यस। डिसिप्लिन नहीं हो तो डोंट थिंक कोई भी कर पाएगा। मतलब सेकेंड काफी। इज, हाँ जी हाँ जी, हाँ मतलब काफी सडन चेंज है ऑब्वियसली ट्रू ट्रू ट्रू, कॉर्पोरेट लाइफ अग्री। में आने। सेकेंड इज योर हेल्थ, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ अगेन। डिफरेंशिएटिंग विद द कॉलेज लाइफ, कॉलेज में हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई टाइम नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं पता हमें, कुछ भी खा लेंगे, कभी भी खा लेंगे, एंड दैट इज ओके टिल इट इज कॉलेज लाइफ। बट अल्टीमेटली जब आप कॉर्पोरेट में होगा, आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एंड स्पेशली इफ यू आर एन आउट स्टेशन स्टूडेंट। जो लोग घर पे रहते हैं वो फिर भी, जो उनका फूड एंड दे आर वेल सर्व, बट जो बाहर रहते हैं उनको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, एंड अल्टीमेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इज हेल्थ। कि आपका टिफिन आ रहा है, बाहर खा रहे हो, तो आपको देख के खाना पड़ेगा, अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। थर्ड एब्सोल्युटली। इज योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी, बहुत सारे लोगों की, मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टार्ट अर्निंग वाया इंटर्नशिप्स इन कॉलेज इटसेल्फ, बट बहुत सारे लोगों की फर्स्ट प्रॉपर इनकम होती है। तो आई वुड से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने खुद की लेनी पड़ेगी जितनी जल्दी हो सके। अभी हम कॉलेजेस में क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन, कॉलेज में फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, जितने पैसे मांगने मांगो, बट स्टार्ट ट्राइंग टू बिल्ड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे आपका आता है, जो बेसिक चीज है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आप वो लेके रख सकते हो, दीज ऑल कम अंडर फाइनेंशियल अलर्टनेस। आप फाइनेंशियली जितना प्रूडेंट होगे, जितना अर्ली, उतना आपका फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितनी जल्दी हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लोगे, उतना आपका प्रीमियम कम पड़ेगा, दैट इज नोन यूनिवर्सली। तो अब आपको फाइनेंशियली प्रूडेंट होना पड़ेगा जब आप पैसे कमाने लगते हो इनिशियली, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अर्निंग फॉर योर प्रेजेंट सेल, बट आपको एक सॉर्ट ऑफ प्लान बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, आई हैव अ सॉर्ट ऑफ डेटा वेयर आई ट्रैक माई एक्सपेंसेस फॉर द डे, एंड देन आई सिट डाउन एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड मैं देखता हूँ कि कितने चीजें बॉन्ड्स में गई हैं, कितने पैसे बॉन्ड्स में खर्च हुए हैं, कितने पैसे नीड्स में खर्च हुए हैं, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट से मेरे, एंड स्टफ। तो मैंने क्राइटेरियाज बना रखे हैं, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। आप कंपेयर कर सकते हो मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, कि आपका क्या प्रोग्रेस रहा है, कुछ बड़ा भी है या कहाँ पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सो दैट इज बीइंग फाइनेंशियली प्रूडेंट, एंड वो बहुत जरूरी होता है व्हेन यू एंटर इनटू कॉर्पोरेट, बिकॉज So is there इफ any, यू कैन मैनेज योर मनी, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। is there any software on which you track? नहीं, नॉर्मल एक्सेल, नॉर्मल Normal. स्प्रेडशीट। आई एक्सेल। हैव हाँ मेड हाँ। अ, हाँ, आई हैव मेड अ spreadsheet. So what I do, I have made a spreadsheet with 3 to 4 categories, like wants, needs, investments, इन्वेस्टमेंट। uh, for 1 to 2 more, I don't remember exactly. Like, passive income. One is for passive income, and one is more. Like 4 to 5 categories are there, and I have put a drop down on one of the columns in the Excel sheet. So now what I do, I have Google Notes app in my phone. So Yeah. whenever I make any sort of expense, for example, even if it's for 10 rupees, even if it is for 5 rupees, it's not about the amount of money, it's about the accountability. So I note that down in my Google Notes app at that particular moment. And at the end of the day, when I sit down, like while surfing YouTube or while doing anything, I just copy that particular thing to my Excel. That is just a 5 minute task for the entire day, but that makes you responsible. That makes you accountable.
That's very great. One thing I wanted to ask, from past years, there has been an image of corporate life which has been created in my mind. मतलब ऐसा है कि ऐसा जैसे मैंने रियलाइज़ करा कि कॉर्पोरेट लाइफ में 9 टू 5 आप जॉब कर रहे हो, स्ट्रेस होता है, एंग्जायटी होती है, वर्क प्रेशर होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है और आप एज़ एक लेबर बन जाते हो। मतलब ये वर्ड काफ़ी सुना है मैंने, यू वर्क एज़ अ लेबर and you are just an employee where you're trapped in a cycle of you just want to increase your salary at the end of the month. I mean ऐसी-ऐसी बातें सुनते हैं काफ़ी। अब एक I just saw your LinkedIn post also आपने मेंशन करा था कि that we wait for those 2 days of a week, Saturday, Sunday and then we again have to work. तो मतलब काफ़ी थोड़ा डरावना लगता है। मतलब ये कैसी लाइफ के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि एंड में हमें ऐसे ही जाना है। तो आपका रिव्यू क्या है मतलब इस बात पे? एंड व्हाट डू यू थिंक? Is there Got it. any kind of reality to it? Or it's just a matter of perspective we have? Got it. So देखो हाँ ये आई वुड वेरी मच अग्री कि बहुत एक नेगेटिव से जोड़ दिया गया है जॉब को आज के वर्ड में बिकॉज देर आर मोटिवेशनल रील्स मोटिवेशनल वीडियोस जो कहते हैं कि जॉब इज नॉट वर्थ इट बिजनेस वर्सेस जॉब देर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन बिजनेस वर्सेस जॉब के बिजनेस में जाओ ये क्या रखा है जॉब में 9 to 5 स्लेवरी एंड द वर्ड यू यूज लेबर ये तो बहुत यूज होता Liver, है लेबर बहुत का ज़्यादा हाँ। हाँ तो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव देखो आई हैव सीन पीपल जो इस वर्क को एंजॉय भी करते हैं एंड आई हैव सीन पीपल जो मतलब करते हैं बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास फॉर For the नाउ sake of it, हाँ। हाँ फॉर द सेक ऑफ इट करते हैं बट करते हैं अब फॉर एग्जाम्पल देर आर लाइक अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव इफ यू आर एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर डोमेन फॉर एग्जाम्पल आपको क्या पसंद है आई वुड लाइक टू आस्क यू बोथ सुजल एंड आयुष फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हम्म। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर हो गया इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स या कोई भी चीज आप चूज कर सकते हो कोई एक चीज जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो तो व्हाट वुड यू चूज Sujal will be your gym. Anyways, yeah, if I talk about career aspect, I would like to do things related to investment and managing portfolio and all that. I mean, I have interest in that. I am much Got it. inclined towards Bucks. that. So that is If somewhere I I'm were inclined. to, if it comes to me, if I were to give an illusion, I sometimes what happens is such thoughts come in my mind. For example, I am gymming. If someone were to give me money for just exercising, how good it have been? It would have been. But obviously, that's totally illusional. If I come a bit to reality, I earlier used to play cricket, so I have a quite keen interest in sports. But right now, due to some reasons, I got dropped off from the sports side. But right now, I have a bit of interest towards entrepreneurship more than doing a job. I feel like starting off something of my own. But obviously, I can't solely rely on starting something of my own. I will have to have some backup towards through which I can move forward in my career. So yes, that is something which is stands Got in it. my scenario. Got it. So you might have noticed कि जब भी हम कोई काम करते हैं लाइक रिलेटेड टू लाइक अगर फॉर एग्जांपल किसी को रीडिंग पसंद है ठीक है एंड उनको वो बुक अच्छी लगती है एंड इफ दे स्टार्ट दैट बुक दे आर सो एनग्रोस्ड इन द रीडिंग ऐसा बहुत बार होता है जब हम वो काम करते हैं हमें पता ही नहीं लगता टाइम कब निकल गया करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो आप कोई सीरीज देख रहे हो यूट्यूब भी देख रहे हो कुछ भी देख रहे हो कोई मूवी भी देख रहे हो आप बार बार एक एक टाइप की मूवी है ए टाइप की मूवी जिसमें आप बार बार अपने टाइम को देख रहे हो यार कब खत्म होगी कब इंटरवल होगा कब जाएंगे एक टाइप की मूवी आपको पता ही नहीं चलता कि स्मूथनेस के साथ कब वो खत्म हो गई सही बात है. तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव आप किस चीज आपका इंटरेस्ट अल्टीमेटली कहाँ है इफ यूर आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट द बुक इकिगाई Yes, yes, we have heard Ikigai. that. so there's a beautiful intersection of circles कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा था कि लाइक मतलब दुनिया आपको जिसके लिए पे करे आपका जो इंटरेस्ट हो वाज वन सर्किल एंड देयर वाज वन मोर सर्किल दुनिया को उसकी जरूरत हो मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जिसकी डिमांड हो मार्केट में करेक्ट तो जब ये 3 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना दैट मेक्स द परफेक्ट थिंग तो अकॉर्डिंग टू मी आप अगर उस चीज में आपका इंटरेस्ट है तो देन यू वुड फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग जो दूसरे डिफिकल्ट फाइंड कर रहे हैं इजी गोइंग बट वही चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है बट आप जबरदस्ती कर रहे हो तो देन यू वुड फाइंड दैट बोरिंग एंड दैट इज द केस विद कॉर्पोरेट करियर एंड कोई भी करियर आप उठा लो कोई भी चीज आप उठा लो सो यही वाला चीज है बिकॉज अल्टीमेटली जब आप एंटर करोगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा एज अ ग्रेजुएट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कुछ नहीं पता होगा आपको सीखना होगा सो यू शुड बी ओपन टू लर्निंग ऑल द टाइम Does it affect your personal life as well, do you think? पर्सनल Time लाइफ इन मिलता टर्म्स ऑफ लाइक मतलब as I have seen in my cousins and all, काफी बिजी रहना, टाइम नहीं मिलना घर वालों को, मतलब सुबह से रात दे आर जस्ट engrossed in work and all. थोड़ी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती होगी कुछ लेवल पे, like you feel like ट्रू ट्रू आई वुड अग्री
थोड़ी सी पर्सनल इफेक्ट होती है, एंड दैट टू आई वुड से डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट मंथ्स या डिफरेंट टाइमिंग्स होती है, बिकॉज नो वन इज एनग्रॉस, या कोई बिल्कुल नहीं करता 12 मंथ्स राउंड द ईयर, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई 12 मंथ्स लगातार काम में लगा रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिट फील्ड देर आर 3 to 4 months जो फाइनेंशियल ईयर के जस्ट प्रायर होते हैं, लाइक अप्रैल इज द न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो जैन टू मार्च इज द बिजी सीजन, नोन एज द बिजी सीजन, क्योंकि उसमें फाइलिंग होती है क्लाइंट्स की, एंड उसमें ही मेजर स्टफ होता है. तो दीज 3 मंथ्स इवन द कंपनी सेज, या बिग फोर में भी या कोई भी ऑडिट कंपनी सेज कि इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली जब आप अप्रैल, एंड वो स्टार्ट होता है अप्रैल टू दिसंबर, इज इजी गोइंग, इतना प्रेशर नहीं होता. सो इट इज दिस टाइमलाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, तो वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है. Okay. So, Utkarsh, as you just mentioned about the book Ikigai, I would just like to come back to that section because there was one of my unanswered questions that was there in my brain. Sure. You said that there is an intersection of those three circles in the book, isn't it? For example, something right now intersection of a circle wherein where is the demand in the market, wherein what interests you, and there was another thing, right? So there is one question that arises in my mind. That is it is there any surety? I mean, is it necessary that you will surely find that intersection? Because sometimes it's a trade-off, right? That, for example, is there if there is something that incites your interest, but it's not necessary that it is a demand of the market as well, isn't it? It is not necessary that if something incites your interest, it will be surely a high-paying stuff, isn't it? So, is there a surety that you will surely find that intersection in your life? Wouldn't there be trade-offs that if there is something that or for example, let's say there is for example there is a high paying skill, but you don't have any interest in it, for example you don't know how to move on with that skill. So sometimes there is a trade-off, right? So how to eliminate the trade-off? Agree. I would agree that there can be a trade-off, because considering this scenario, the economy is not equivalent. There are ups Yeah. and downs. So if someone will go up, someone will go down. So that is correct. There will be trade-offs. So to counter this, what we can do is basically we can try our best. We can do what is in our hand, because ultimately, I would like to take one example. For example, as you said, your example itself, कि जिमिंग के लिए कोई पैसे देता. For example, let's consider this example. You are perfect at gymming. आपको सारे postures आपके He's correct हैं. perfect. हाँ. He's So आपको okay. postures सारे आते हैं, आप सारा जिमिंग करते हो, but ultimately जिमिंग में उतना हाई डिमांड नहीं है, एंड ड्यू टू इतना हाई डिमांड नहीं है तो उतना पे भी नहीं है. ठीक है. तो अब टू टैकल दिस व्हाट यू कैन डू, आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. अभी वो सारे जो भी ये इंक्लोजर्स हैं वो सारे नहीं खुले हैं, दे आर नॉट ओपन. तो आपको थोड़ा बहुत इनोवेट करना पड़ेगा. आप कुछ उस पर्टिकुलर फील्ड में जिमिंग कर रहे हो, बहुत सारे जिम्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी निकालना पड़ेगा. बिकॉज आई विल कोट वन एग्जाम्पल मोर. फॉर एग्जाम्पल अभी पॉडकास्ट है, बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, बहुत सारे. ठीक है. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स योर पॉडकास्ट यूनिक? One thing, I think we are able to connect with the guest in a True. much better way, maybe. I think for me, for example, the way Ayush and I started. For example, if you see, मैं ज़्यादा podcasters को देखो YouTube पे तो एक single बंदा है. But we are two. But that is not a correct reason to state it that we are two. तो उससे फर्क क्या पता लगा कि हम दो ही है. But the thing is, for me, we have started it from the very scratch, and the type of guests that we invite. क्योंकि the type of guest, if we see on the shows of Ranveer Alabadia or maybe on the shows of let's say there are many podcasters, right? You will say see the guests of very high profile, for example, startup entrepreneurs, celebrities, and all those stuff. But we invite guests from our, let's say, from our college life only. I mean, the people who are still growing in their career, isn't it? So there is a lot to learn from also the people who are right now growing in their career than just solely learning from the people who have already grown in their career, right? So there's a difference. So maybe that is the perspective that we bring in, or rather the new perspective that we bring towards the audience. Maybe from my perspective, it cannot be that stuff, but yes, that is what I think. If this is your perspective, you have to do just one thing to grow, just stick to it for long. Because whether it be YouTube, whether it be anything, the person who can stick consistently to a particular thing is the one who wins ultimately. Because Yes, obviously. yeah, because there are a lot of people who are starting to think कि मैं podcast कल चालू करता हूँ, आज चालू करता हूँ, आज ये बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ. There are a lot of people who are thinking.
ठीक है. So someone said this, I don't remember who, but uh, planning something is cheap, execution is expensive. Yeah, yeah. You have And there already was you have already taken that first step. आपने execute कर लिया है, but आपको Mhm. बस इसको stick करना है as long as possible. there is one more quote that even I heard, Sure. maybe on Instagram, or so I don't know. It said that thinking creates more thinking, whereas action creates more clarity. So if you want more Correct. clarity in life, you better take action rather than solely thinking. And this happened True. with me and Ayush as well. For example, जब हम पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, हमने सोचा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं. हमने सोचा कि करते हैं, हाँ कल करते कल करते. फिर एग्जाम्स आ गए. फिर दिसंबर के Mhm. एग्जाम्स आ गए सेमेस्टर के. फिर हमने बोला अब एग्जाम्स खत्म होते हैं तब करते हैं, है ना. लेकिन बट फाइनली हमने एग्जाम्स के बाद शुरू कर दिया. उसके बाद हमने डिले नहीं करा. तो फाइनली यूट्यूब चैनल चालू करा. वी स्टार्टेड इट. और अब ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ रही है कि आगे कैसे बढ़ना है. So yes, from my personal experience, if I were to say, then yes, that quote fits really well. Also, the quote that you said and the quote that I said, that thinking creates more thinking True. and action Mhm. creates more clarity. So if you want more True. clarity True. in True. life, action लोगे तो better रहता है. ये चीज है from my Very perspective. true. Very agree. Yes, obviously. Also, Utkarsh, what's your take on the social media aspects? Let's say Instagram, LinkedIn. What do you, at what perspective do you think? To be very honest with the LinkedIn, audience and you, I don't have an Insta ID till now. I don't feel like just seeing where others go, what they eat, what they wear. I don't care, to be very honest. At the same time, I don't feel like showing them where do I go and all. So, what's your perspective on using Instagram, LinkedIn, where people are just romanticizing their life? मतलब काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि True. मतलब पता होगा आपको स्पेशली True. ऑन लिंक्डइन सो व्हाट True. डू यू थिंक एट व्हाट पर्सपेक्टिव डू यू सी दैट because before you So, answer this, yep, before you yep. answer this, there's one more thing that this the friends that I have in the college, isn't it? They often say this, that the LinkedIn profiles of the alumni, especially the LinkedIn profile of you, the profile that पीपल you लाइक have, यू मेक अस it फील creates इंफीरियर it creates more of depression rather than creating a sense of inspiration in us. यस यस They're like we feel इन सम a मैनर sense of यस depression in ourselves that we haven't done anything. Isn't it? For example, Utkarsh has done this, or some other person डेलॉइट has एंड done ऑल दैट this. But where are we? यस We are यस just sitting at home watching Netflix, doing something or the other, whatever it is. scrolling through LinkedIn We haven't done and anything. seeing his profile he's winning competitions and all I don't Yes. can make any person inferior to be very honest so yeah what's Quickly. your take on upon That all is this a natural human psychology, how it moves, right? Okay. So coming to the social media, you will also agree that we only see 1% of what people actually are. They're only showing the happy side, the brightest side, जिस पे सबसे ज्यादा फिल्टर लगा हो, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक फिल्टर इन टर्म्स ऑफ बोथ वाकई में वैसे भी एंड इन हम्म टर्म्स ऑफ लाइफ एज वेल. वो सारी चीजें आपको नहीं दिखाते. What we see on social media, LinkedIn or Instagram is just 1% of their life. Maybe even less than that. We don't even know. less yes yes So what happened? Coming to the Instagram, when I was in my college, my take was totally different. I used to travel initially. I used to travel कि मैं बस Instagram story डाल सकूं. So I think ये बहुत सारे लोगों का होगा कि मतलब वो जाते हैं. So first thing is ये Snap. I never installed Snapchat. बाकी मतलब को दिक्कत Instagram नहीं. तो था, but I never installed Snapchat. तो initially Snap डालते हैं. बेसिक एंड देयर माइंडसेट इज बेसिकली कि देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी, जबकि उनको खुद को पता है कि उनकी लाइफ नहीं चल रही अच्छी. वो बस थोड़ा सा घूमने आए हैं. सोशल रिकॉग्निशन बस उन्हें काइंड ऑफ सोशल रिकग्निशन दैट एक्सेप्टेंस सोशल वैलिडेशन चाहिए कि ये हाँ घूमने गया है. एंड जो दूसरी साइड, द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, नो मैटर वो जितना भी अच्छा कर रहा हो, वो उस समय पढ़ाई कर रहा हो किसी एग्जाम की या कुछ और कर रहा हो, वो फील के इंफीरियर फील होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, एग्जाम नहीं निकल रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, एंड ये देखो बाहर घूम रहा है. मुझे मार रहा है हाँ, खैर बिकॉज खैर हाँ आई विल टेल यू दिस कि ये सीक्रेट था, बट अब तो मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है. बट आई विल टेल यू ओके दिस सीक्रेट व्हाट दैट्स हैपेंड इन ग्रेट कॉलेज लाइफ. मैं जैसे कहीं घूमने जाता था ना, लाइक एक दिन में है कहीं 2-3 जगह नई जगह घूमने गया. सो आई यूज टू क्लिक फोटोज एंड वो गैलरी में सेव हो जाती थी. एंड मैं बाद में 3-4 दिन बाद स्टोरीज डालता दिखाने के लिए कि आज मैं यहाँ गया था, कल मैं यहाँ गया था और परसों मैं आ गया. मैं तीनों दिन घूम रहा हूँ. जबकि वो ओके पूरा फेक था, 100% फेक था. ठीक है. सो दैट वाज द थिंग. बट अल्टीमेटली अभी मेरे को रियलिटी समझ आ गई धीरे धीरे. एंड इट इज ग्रेट कि आप लोग को पहले ही समझ आ गया कि ये सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है. सो आई डीएक्टिवेटेड माई इंस्टाग्राम. पहले आई यूज टू मेक रील्स एज वेल, तो तब मैंने यस और यस किया हाँ था. मैंने देखी थी हाँ, काफी अजीब अजीब सी रील्स पे रील काफी थी देखते पता हुए नहीं क्या कुछ था पहले अच्छा मैं था कुछ हाँ 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 पहले मैं रील्स ही बनाता था. बट अल्टीमेटली ठीक है, वो एक चीज था. आई टेस्टेड एंड ट्राइड but आउट. that was quite सिमिलरली आई entertaining. ट्राइड.
हाँ, आई ट्राइड यूट्यूब एज वेल। मैंने 150 प्लस यूट्यूब वीडियोस डाली है ओह, यूट्यूब Oh, पे। is it? हाँ, That's सो good. आई हैव किस अराउंड टॉपिक पे? 700 800 सब्सक्राइबर्स। मैंने रोस्ट ट्राई किया है। ए, इफ यू आर अवेयर ऑफ चैनल्स लाइक नियॉन मैन या न्यूज बॉय करके, जो सोशल मीडिया न्यूज देते हैं, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द सोशल मीडिया सर्किट, हम्म। वो वाला भी ट्राई कर लिया मैंने। गेमिंग भी ट्राई कर ली यूट्यूब पे ही, ए, एंड रोस्टिंग बोल ही दिया। मैंने स्किट्स भी ट्राई की हैं, जो छोटी छोटी लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स स्किट्स होती है। सो आई ट्राइड माई हैंड एट रील्स यूट्यूब। तो अब कुछ और नया। सो आई डीएक्टिवेटेड इंस्टा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इससे कैसे कोप करें, आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट क्वेश्चन, राइट? कि और आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो इस चीज को? मतलब लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाना, लाइक लिंक्डइन की बात है, कोई दिखाएगा वी हैव वर्कड एट दिस, एक्सपीरियंस एट दिस, इंटर्न एट ये, मतलब पता होगा आपको, प्रोफाइल देखोगे ट्रू 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 लोगों ट्रू, की, और रियलिटी में दे लिटरली हैव काइंड ऑफ लो नॉलेज इन दैट फील्ड, गॉट इट। हाँ, एंड सो आई पीपल विल लाइक एग्री। अस हाँ, फील इन्फीरियर कि यार इसके पास तो ये है, ये क्या क्या ही जिंदगी जी रहा होगा। सो समथिंग लाइक दैट ओनली। ट्रू ट्रू ट्रू। व्हेन आई स्टार्टेड लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, तब मेरे को भी यही सेम चीज लगती थी, लिटरली सेम चीज लगती थी कि ये इतना कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप लिंक्डइन खोलो ना, देर आर पोस्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, XYZ कर लिया, ये कर लिया। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट आई हाँ हैव हाँ, आई क्लियर्ड एम डिलाइटेड टू Yeah, अनाउंस दैट, टू बी मोर स्पेसिफिक। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कराता है अल्टीमेटली। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल। बिकॉज जैसे इंस्टाग्राम है, वही सेम चीज, दैट सेम थिंग्स फॉल्स फॉर लिंक्डइन एज वेल। कि वहां पे भी लोग अपना स्टेटस दिखा रहे हैं या बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाह रहे हैं, लिंक्डइन पे भी वही चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज, आई वुड, इफ यू नो दी बैजेस, वो बैजेस मिल रहे हैं, दैट मेरे पे भी ऑफर टॉप आया था। मार्केटिंग वॉइस, top voice, टॉप दिस top हाँ voice, वॉइस। हाँ। LinkedIn top हाँ, voice. yep. So even I got an email stating that, कि मतलब, बट मैं वो नहीं लगा रहा अच्छा अच्छा, बिकॉज you got? सबको ही मिल रहा है वो चीज अल्टीमेटली। अच्छा। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि वो, बिकॉज वो इनविटेशन ओनली होता है अल्टीमेटली। एंड जो ज्यादा एक्टिव रहता है, विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो ज्यादा एक्टिव रहता है ऑन द प्लेटफॉर्म, वो उन्हें Hmm. भेज रहे हैं इनविटेशन। Who is it? And does हाँ, having number of It is followers that also easy help? to get that. नंबर ऑफ Having फॉलोअर्स number of डज मैटर। followers and audience and just posting regularly as you did, तो उससे यस वाकई में कोई यस फर्क यस, पड़ता है? उससे फर्क बस इस टर्म में पड़ता है कि यू गेट टू एक्सपैंड योर कनेक्शन फॉर दिस। आप और नए लोगों को जानते हो, दूसरे एरिया से लोगों को जानते हो, दूसरे इंटरेस्ट से लोगों को जानते हो, दूसरे जॉब्स जो दूसरे जगह पे काम कर रहे हो उन लोगों को जानते हो। तो इन केस यू हैव वन, यू वांट टू स्विच योर करियर, आपको दूसरे जॉब में जाना है, यू जस्ट लिंक्डइन एंड आउट, लाइक लिंक्डइन पे जाके आप सर्च करते हो कि इन केस इफ योर कनेक्शन इज वर्किंग देयर, लाइक एनी ऑफ योर कनेक्शन इज वर्किंग देयर, तो ईजी हो जाता है लाइक टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन। तो वहां पे भी बस आप नेटवर्किंग ही कर रहे हो एक तरह से, द वन दैट यू डू इन कॉलेज, इन सोसाइटीज, इन कॉर्पोरेट्स, ऑन लिंक्डइन। वो नेटवर्किंग ही मेजर चीज है। अब इससे क्या होता है, जब आप पोस्ट करते हो कुछ अच्छी चीजें या कुछ अच्छे कोच, या आप रेगुलरली पोस्ट करते हो, तो आपका लिंक्डइन सॉर्ट ऑफ एक्टिवेट हो जाता है, एक ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, आपका कंटेंट वो पढ़ते हैं, उससे एंगेज करते हैं, तो दैट गिव्स यू अ मच बेटर रीच एवरी टाइम। तो जैसे जैसे आपका रीच बढ़ता जाएगा, आपका एक सर्किट में नाम होता जाएगा। तो दैट इज द ओनली थिंग, एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज, जो हम लोग चाह रहे हैं, द रिजल्ट इज की नेटवर्क बढ़े, जितना एक्सपेंसिव, जितना डाइवर्सिफाई हो सकता है नेटवर्क एज पॉसिबल। Okay. So, Utkarsh, there were some questions that obviously were revolving around in my mind for the past couple of days. And obviously, these are not just my questions, but the question of almost every undergraduate student who is right now through his college life, right? So, a big question comes to internships, right? That how to get good internships. Because when we talk about internships, so we often, almost every student sees internships like internship of HR, sales, wherein they just ask you to put a post. For example, Hmm. HR internship, they just ask you to put a post on LinkedIn that we are hiring. Or sales internship, they ask you to sell a course. Isn't it? You get sell a course, you get this much stipend and all those stuff. So there's a big race towards getting good internship, wherein you don't just get good stipend, but also get to learn something valuable, through which it increases your chance of employment, and not just increase your chance of employment, but makes you a better person in your in the certain profession that you are particularly following, or the career that you want to move in. So yes, how does an undergraduate student find that sort of internship? Because I think you have done internship in an early startup as well. I think you told this to me once. There Yep. was one of your senior under Yes. which who did your internship in a startup. So how do we actually find good for, so
this question of mine is divided into two halves. First of all, how do we get good internships? Not the ones like HR and sales internship, the ones which actually add value into us. And the other half of the question is that how to get internship in early startups, because that is also a good thing, right? Even True. I think that day when I conversed with you, you told me that getting an internship in an early startups instills a lot of value in you, because you work at the front place. You work just up front, isn't it? You are now someone is not there just ordering you. You are taking an active part in the company also, whatever it is. So how do we get good internships and internship in a proper early startup? What do you suggest to all the undergraduate students who are currently listening to us? Got it. So for getting good internships, firstly, good internships are rare. Firstly, we have to admit that because internships तो हर दिन roll out होती रहती है नई नई internship. Because as Sujal said कि वो internship mostly जो होती है वो sales, HR, marketing, that basically revolves around ये share कर दो, वो share कर दो, ये कर हाँ, दो. That is very very basic इंस्टाग्राम पे ये डाल internships. दो, इंस्टाग्राम पे वो डाल दो. बस उसमें कोई value नहीं add होती, zero value add होती है. Hmm. So if anyone wants to do internship just for the sake of certificates, तो ये best है, कोई issue नहीं, इसमें certificates मिल जाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई issue नहीं है. But if you genuinely want an internship जिसमें value add हो, जिसमें you want to improve yourself, उसमें आपको थोड़ा सा efforts डालना पड़ेगा. Because efforts के बिना अच्छी चीजें नहीं मिलती. Let's be honest. तो efforts in terms of क्या कर सकते हो, how I started, how I initiated, I would like to share that. एक Excel लो, create a database. आपको कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करनी है. चूज as much companies as possible and choose as many big names as possible. MNCs हो, government organization हो, write that down. 15-20 companies एक बार लिख लो जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी है. मतलब लोग कहते हैं ना, लाइक ड्रीम कंपनी या ड्रीम इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ. बट बच्चों को तो ये भी मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होता कि किस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो. ये बस पता होता है कि हाँ इंटर्नशिप करनी है, किसी भी कंपनी में मिल जाए. उनका ये भी पर्सपेक्टिव नहीं होता कि मिल अच्छा जाए. मेरे को जोमेटो में करनी है, मेरे को स्विगी में करनी है, ऐसे ऐसे. तो वो वहां तक भी कैसे पहुंचे कि उन्हें ये नहीं पता होता कि गॉट कौन सी इट कंपनी में करनी है. पहला स्टेप ही गॉट वो इट हो गॉट जाता इट सो इनिशियली इफ यू वांट टू फिगर आउट कि कौन सी जगह पे इंटर्नशिप करनी है, तो आई वुड से कि एक बार आपको सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए. मतलब कोई भी सीनियर से, नॉट नेसेसरली कि वो एक सीनियर जो ऑलरेडी उस जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसने भी एक एक दो इंटर्नशिप की हो या इंटर्नशिप. हाँ जी सुजल, यू वांट टू से समथिंग. है. और वॉच दिस एपिसोड ऑफ आवर्स. हाँ, और वो यस, दिस विल बी द परफेक्ट एपिसोड फॉर टू Yes. फिगर आउट दिस प्रॉब्लम. And this तो will एक सीनियर this से will go as a promo line for our episode. डन 100%. सो यू हैव टू कंसल्ट योर सीनियर. उनको ज्यादा पता होगा अल्टीमेटली, बिकॉज उन्होंने एक साल कॉलेज लाइफ आपसे ज्यादा जी है. तो दे विल कम टू नो कि आप उनको बताओगे ना क्या ये इंटर्नशिप सही है, बिकॉज दे विल टेल यू कि ये जो मार्केटिंग HR इंटर्नशिप आपके व्हाट्सएप पे रोज फॉरवर्ड हो रही है, दे आर नॉट रियल इंटर्नशिप्स. फर्स्ट थिंग, तो आप उनसे उस जस्ट गोइंग फॉरवर्ड आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि फिर कौन सी इंटर्नशिप मुझे करनी चाहिए, किस डोमेन में करनी चाहिए. बिकॉज व्हाट आई फील, इफ यू आर एन अंडरग्रेड स्टूडेंट, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ट्राई योर हैंड इन एवरीथिंग पॉसिबल. अगर आपको आपका फेवरेट डोमेन या आपको नहीं पता आपका इंटरेस्ट किस चीज में लाई करता है. दैट वॉज माई साइकोलॉजी व्हेन आई एंटर्ड फर्स्ट. So for me, I did an internship I have done an internship in content writing. I have done an हाँ. internship in copywriting. I have done an internship in research, like research paper writing. I have done an internship in logistics. I have done it in at a government organization. So if you don't know where your interest lies, अगर interest पता है फिर तो ठीक है. Try to find that internship, वो particular job की internship है, उस particular role की internship in any company. Try करो. बट अगर इन केस जो मेजोरिटी लोगों के साथ होता है उनको अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता, ट्राई योर हैंड एट एवरीथिंग थ्रू डिफरेंट इंटर्नशिप, थ्रू डिफरेंट रोल्स. तब आपको पता चलेगा. एंड नो मैटर, अब आप सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से लेट्स से क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग ऑन लिंक्डइन एंड स्टफ, यू विल नॉट गेट दिस इंटर्नशिप एट द बिग फोर या कंसल्टिंग, क्योंकि वो ये काम करते नहीं. यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. आप एक छोटे कंपनी में एक क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट करो इंटर्नशिप, एंड देन यू कैन अल्टीमेटली वेंचर इनटू, वो शो कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये काम किया है, ये रिजल्ट लाया है. एंड देन यू कैन अल्टीमेटली वेंचर इनटू MSMEs और बिगर कंपनीज. तो यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. इफ यू सो जस्ट टू क्लैरिफाई, अगर आपको आपका डोमेन पता है, वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, तो आप स्टार्ट कर दो उस डोमेन में, उस रोल में कौन कौन कंपनीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं थ्रू देयर करियर पेजेस और थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स. बट इन केस
द मैटर विद मेनी ऑफ द पीपल या मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज कि उनको पता ही नहीं होता उनका इंटरेस्ट किस चीज में लाई करता है. तो देन यू कैन स्टार्ट विद ट्राइंग आउट एवरीथिंग वन थिंग एट अ टाइम. दो एक एक करके सारी चीज में हैंड ट्राई करो. Is that what I would say? And what is the second part? Like how to get internships in startups, earliest startups, just like अच्छा, you got got it. in one. Okay. So coming अब ये तो Is there any बहुत ज्यादा specified path towards it, or is got just a it. matter of luck that you get it? No, I would say it's a mix of both. It's Okay. luck as well, and it's the efforts that you make. So अब तो और ज्यादा easy हो गया है. I hope everyone across the country is aware about Shark Tank India. Yeah. I was just There seeing an episode of it before shooting it. are so there are a plethora of startups. अब Shark Tank 1, Season 2, Season 3, there are plethora of startups. And जब इनको एक बार फंडिंग या फिर इनकी एक बार मार्केटिंग हो जाती है ना, इवन इफ दे डू नॉट गेट द फंडिंग इन द शो, तो बहुत सारा इनका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली एक लेवल तक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, बिकॉज वहां मार्केटिंग हो जाती है इवन इफ उन्हें फंडिंग नहीं मिलती. सो व्हाट हैपेंस इज दे टैप ऑन टू देयर लिंक्डइन पेजेस, गो ऑन टू देयर लिंक्डइन पेजेस. वो एक्टिव हायरिंग करते हैं इंटर्न्स की. Who is it? व्हाई? बिकॉज वो उनको कम पैसे पे अगर अच्छा टैलेंट मिल रहा है, सो व्हाई नॉट. एंड यू हैव वेरी हाई चांसेस कि अगर आप स्किलफुल पर्सन हो एंड आपने उनको दिखा दिया कि you have that capability, you have a very good chance of earning an PPO there itself. Who is it? I think Yes. that's a great insight. Yes, I have five to six juniors who have PPOs from Shark Tank India ke startups. Oh, I think this is something not many would be knowing. Yes. So we So just that have to is contact them. Those startup, we just have to. I mean, they're searching on LinkedIn. The people who are working there. हमें मतलब उन्हें contact करना है basically हाँ जी, for getting. कॉन्टैक्ट करना है बट इन अ यूनिक वे अगेन, बिकॉज जैसे ही थोड़ा सा भी उनकी मार्केटिंग होती है, दे हैव बिकम अ बिट ऑफ फेमस. बहुत सारे उनके पास एप्लीकेशन आएंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस. उनके पास जॉब एप्लीकेशन जाएंगे, उनके पास इंटर्नशिप एप्लीकेशन जाएंगे, मल्टीपल जाएंगे, थाउजेंड्स में जाएंगे. हाउ इज योर एप्लीकेशन, हाउ यू कैन मेक योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ अदर्स? कुछ कैची सी आप लिंक्डइन पे मैसेज लिख रहे हो, जब मेल लिख रहे हो तो कुछ कैची सी सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हो. दैट इज व्हाट विल मेक यू अपार्ट. तो वहां पे, क्योंकि वो सारी मेल्स नहीं खोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन थाउजेंड मेल्स, बस वो एक वन मेल जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो में भी अटैच कर सकते हो, क्या प्रीवियसली वर्कड इसमें, या फिर मैंने ये कोर्स किया है, सो आई थिंक आई एम अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल जो आप देख रहे हो. बिकॉज अभी इफ यू गो जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड यू बोथ और द पीपल हु आर व्यूइंग दिस, जो भी शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के अभी जितने भी स्टार्टअप्स आए, जस्ट गो ऑन टू द लिंक्डइन पेजेस. 90% of the startups ने hiring निकाली होगी, hiring in terms of interns, jobs and कोई other roles. We just need to be active and alert. मतलब normally क्या होता है, हमने startup वो Shark Tank India का episode देखा as an entertainment and बंद करके चले गए. But we as students should capitalize upon that. अगर देखा है कोई startup पसंद आया, for example that particular domain, तो एक बार जाके search करो Google पे, LinkedIn पे, you will get that particular role. ऐसे कभी नहीं सोचता कोई. ऐसे कभी नहीं सोचता. दैट इज द ओनली थिंग. इवन आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट बिकॉज माय जूनियर्स ओनली टोल्ड मी कि यहाँ पे मिला, तो देन आई आस्क्ड देम, आई वाज क्यूरियस कि ये कैसे. तो जस्ट अ नॉर्मल मेल बट एन इनोवेटिव वन फॉर देम, दैट Okay, that's good. इंटर्नशिप. There also lies a paradox, right? There also lies a paradox that if you want an internship, you must have a skill. But in order to have a skill, you must have an internship. Agree. So how to solve that paradox? That is a very famous paradox. So I would say initially, if you are in an early stage startup, या फिर you need to work upon yourself. And वो कैसे होगा? I would say YouTube is a very good source. YouTube has multiple scholars who have laid out their things या फिर जो भी उनके पास knowledge है for free. बट हम क्या करते हैं, हम कोर्सेरा पे जाके कोर्सेज खरीदते हैं, हम यूडेमी पे कोर्सेज खरीदते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल उन्हें पूरा कंप्लीट नहीं करते, और जो कंप्लीट करते हैं जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट्स. Yes. Let me be very honest, even I completed some of the courses for certificates because I'll tell you, if you know Google Digital Garage, एक बहुत पहले, अभी पता नहीं है या नहीं, they provide digital. अच्छा है, तो वो डिजिटल मार्केट, हाँ मैंने भी करा है वो. डिजिटल मैंने भी करा है मार्केटिंग, और भूल गया क्या सीखा था, मतलब किसी ज्यादा काम डिजिटल नहीं आया वो. मार्केटिंग ये कोर्स कैसे किया है, बस स्किप सर्टिफिकेट आ गया बस, और वो मैंने लगा दिया कि हाँ किया है. नाउ व्हाट हैपेंड इन वन ऑफ द इंटर्नशिप्स इज कि जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग लगाया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई किया था फॉर इंटर्नशिप. उन्होंने पूछना चालू किया टर्म्स,
व्हाट इज दिस, व्हाट इज मेरे को एक टर्म नहीं आया। फिर मैंने वो रेज्यूमे से हटाया। देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ रियल स्किल्स, कि जो भी कुछ सीख रहे हो एटलीस्ट मन से सीखो। यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव एंड धीरे धीरे ही आएगा। एंड हाउ यू कैन मतलब ओवरकम दैट पैराडॉक्स इज बेसिकली, आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, so there are very good courses on financial modeling, I would not deny, on Udemy, on Coursera, but अब अगर आप ले रहे हो that course तो try to finish that मतलब truthfully, ऐसा नहीं कि just for the certificate, because अगर आप वो certificate लगा भी दोगे ना CV पे, वो आपसे पूछेंगे questions कि इसमें क्या किया आपने, कौन सा मॉडल बनाया है, कि क्या कोई आपके पास पोर्टफोलियो है जो आप हमें प्रेजेंट कर सकते हो, और वो आपके पास नहीं है तो आप अपनी रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो। Also, Utkarsh, one question is that how has your life been changed after you are financially independent? मतलब, has it increased the kind of fearfulness within you of losing money? Let's say people say that, or let's say greediness of making more money, or has it made you more humble as a person and you have realized or respected the value of money? How do you see money? So I would say it has made me more humble in terms of, because earlier when I was in college, my parents used to give me money, as is the case for most of us. So now I have become more humble in terms of, now I realize the value of money. The money which I would ask कि थोड़ा सा कम पड़ गया इसमें, इन्हें थोड़ा सा ज्यादा देना, या फिर बुक्स के नाम पे कि थोड़ा सा ये कोचिंग फीस देनी है, ये देनी है, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा पार्टी या कहीं घूमने बाहर जाना, इज नाउ आई एम रियलाइजिंग कि वो अर्न कैसे होता है। ठीक है, स्पेंडिंग इज गुड, स्पेंडिंग इज वेरी नाइस, बट देर इज वन कोट, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट दैट गोज लाइक कि स्पेंडिंग इज वेरी इजी, बट अपने पैसे खर्च करने में मजा नहीं आता। दूसरे के पैसे खर्च करने में मजा आता है, बट अपने पैसे खर्च करने में मजा नहीं आता। तो आई एम रियलाइजिंग दैट कोट, दैट थिंग अभी, कि व्हेन यू आर अर्निंग यू आर मतलब जब हमारे पैसे नहीं होते, वी आर ट्राइंग टू बी स्पेंड थ्रिफ्ट, जितना खर्च करो क्या दिक्कत है, चिल मारो। ठीक है, बट व्हेन वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वी ट्राई टू बी माइजर, कि जितना ज्यादा कमो, ये सेविंग्स करनी है फॉर दिस एंड दिस, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग एन आउटस्टेशन स्टूडेंट आपके पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ रेंट, लॉन्ड्री, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। तो वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इधर यू कैन टेक इट एज अ फन एक्टिविटी, या फिर प्रेशर ले सकते हो। आई डू नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि मुझे इतना कमाना है, या पीपल हैव गोल्स कि मेरे को एक्स वाई जेड एज तक इतना कमाना है या इतना कमाना है। आई डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गोल। मेरा अगर बेसिक, if I have a goal on a month basis, if I'm able to save, for example say 50% of my monthly salary, that is more than enough, कोई इशू नहीं है। अगर उसके ऊपर 2 to 3% कुछ ज्यादा बच रहा है तो आई स्पेंड इट ऑन माई वॉन्ट्स या डिजायर्स, बिकॉज अब मैं सारा ही पैसा अगर फ्यूचर के लिए मतलब पीपल से कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, अगर मैं सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ फिर। So you need to be attentive, you need to be responsible, you need to be accountable for your own money. So I would say overall it has made me humble, it has made me realize the value of money. And yeah, मतलब कमाना, because you wait for that day ultimately, कि जब वो पैसा आएगा तो सबसे पहले तो if you are in the tax bracket, टैक्स गया, फिर रेंट गया, फिर जो आंटी आती है उनको काम कर उनको देना है, लॉन्ड्री देना है, तो गए आधे पैसे। ठीक है, बट इट ऑल्सो मेक्स यू सॉर्ट ऑफ प्राउड ऑफ यू एज वेल। मतलब जब वो पहली सैलरी आती है ना, एंड देन यू आस्क योर पेरेंट्स, या आप अपने साइड से ही मतलब कुछ एक अमाउंट अपने पेरेंट्स को देते हो लाइक फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी, वो फीलिंग इज अनमैच्ड। मतलब ऐसा लगता है कि आपने क्या ही कर लिया। And जिस तरह से पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, बिकॉज आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन पेरेंट्स ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। मतलब वो शाबाशी देना भी चाहते हैं तो बोलते नहीं है, मतलब उतना अच्छे से नहीं बोलते, उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट यू अंडरस्टैंड। ज्यादा उछलो मत, सही है। हाँ, तो ज्यादा उछलो मत, उनका वो टॉन्ट ही या वो जिस तरह से बोलते हैं वही उनका प्यार है। तो दैट फर्स्ट सैलरी जब आप दोगे या फिर उसका एक पार्ट दोगे जो भी होगा, तो जो उनकी खुशी होगी और जो आपकी खुशी होगी वो अनमैच्ड होगी, वो कोई नहीं सोच सकता। Right now when So you are yep, saying these words, right now when you're saying these words, it's still giving me goosebumps, right? So yes, that is a very surreal feeling that true. you experience and that your parents experience too, right? True. So now I would like to come up to certain questions that were quite my personal. Like,
almost, if I talk about BCom honors graduate, like we all three are from are have studied BCom honors from our very renowned Shahid Bhagat Singh College, right? So we have done BCom honors from there, and most of the undergraduate students, in order to pursue their post graduation studies, they do MBA, right? Hmm. They will take up their CAT examinations. They want to give CAT examination and want to get in the top IIMs, right? So there was True. this recent couple of studies which I heard also in one of the Raj Shamani's podcasts. I heard this, that in the year 2023 there were around 2.88 lakh applicants who applied for the CAT exam to get admitted in the IIMs, and totally all the IIM colleges, there are totally 60,000 seats. So if we calculate the probability out of 100, if we keep a batch of 100 students, only two students will get the seat. That Hmm. means 2% chance of getting admission into IIMs. But still, there is so much rush. Students just keep this as their sole uh, perspective or their sole way towards their career, isn't it? Now, it's not just restricted towards CAT, it's restricted towards all, it's open up towards all other sort of competitive examinations, be it CAT, be it UPSC, be it NEET JE. You know, there are so many applicants, and out of those, how much seats are there? So if you calculate the percentage, in order the percentage that you have of getting an admission into those top institutions, that is somewhere around 1 to 2%. But still, students blindly move on to that path. So, what perspective do you hold towards this? Do you suggest them not going towards this path, or what say do you have regarding this? Okay. Firstly, we cannot deny the prestige of the universities, the IITs, the IIMs, the NITs that people fight for, the students fight for. They are very worthy of what they serve because ultimately they sort of secure your future. We cannot deny that. But as you said, there are lakhs of applicants, but only 1,000 seats. Only a handful of them get selected, and the selection ratio is basically between 1 to 2%. So that is very rare. So for me, I would say from my perspective, people should venture into more innovative stuff because there are stories that have come out. For example, they do not have money to do something. The people which do not have money to even give the exam, they have done something extraordinary. So slowly and gradually students need to start shifting their perspective towards other things because ये जो चीज थी ना कि like uh, engineer, doctor, lawyer, these are very cliche fields, and but they are very renowned fields. अभी भी and future में भी रहेंगे, no doubts about that. But आपको ultimately spread होना पड़ेगा. You need to diversify your thinking because अगर हम उसी पैटर्न पे चले आ रहे हैं कि 10th 12th या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सेलेक्ट होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो सेकंड अटेम्प्ट देंगे, थर्ड अटेम्प्ट देंगे, या मे बी बहुत भी कम टू हियर दिस न्यूज एवरी डे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं फॉर दिस रीजन कि Right. उनका एग्जाम नहीं हुआ या मॉक, लाइक आई हर्ड अ केस इन कोटा इटसेल्फ कि शायद मॉक क्लियर नहीं हुआ या मॉक में अच्छे नंबर नहीं आए, तो ही सुसाइड. तो अब वी कैन जस्ट मॉक हिम कि मतलब इसमें क्या था, ये कर लेता वो कर लेता, वी कैन मेक फन ऑफ हिज सिचुएशन, बट उसकी सिचुएशन, उसके मोमेंट्स, उसका प्रेशर कितना ज्यादा होगा, इवन लाइक द ओनली पर्सन दैट वुड नो इज हिमसेल्फ. कितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्या कंडीशंस होगी फाइनेंशियल, वी डू नॉट नो. तो दैट इज द थिंग कि हमें थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा बिकॉज व्हेन यू सी अदर कंट्रीज, बिकॉज अल्टीमेटली आर्स इज अ डेवलपिंग वन, व्हेन वी सी अदर कंट्रीज, वहां पे जो बिजनेसेस हैं, वहां पे जो चीजें, वहां पे इतनी सारी डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, लाइक देर इज नॉट वन प्रोफेशन के जिसमें सब लोग जाना चाहते हैं. द डेवलप्ड Exactly. कंट्रीज आर द वंस विच आर डाइवर्सिफाइड. तो हमें भी अल्टीमेटली देयर शुड बी अ शिफ्ट इन माइंडसेट जिसमें डाइवर्सिफाई होगा, एंड पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12, तो नहीं सॉरी इन क्लास 10th, एंड व्हेन वी हैड टू चूज द स्ट्रीम, द साइंस स्ट्रीम और द कॉमर्स स्ट्रीम एंड स्टफ, सो माय पेरेंट्स वांटेड मी टू चूज द साइंस स्ट्रीम. क्यों? क्योंकि 10th में साइंस में अच्छे नंबर आ गए थे. तो उस लॉजिक से ऑब्वियसली साइंस ही था. बट आई कॉन्टेक्टेड माई सीनियर्स मतलब इन स्कूल कि कैसे होता है, क्या होता है, एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन टू द साइंस स्ट्रीम. मतलब मैंने ले लिया साइंस स्ट्रीम, ठीक है, आउट ऑफ प्रेशर. मैं 1 महीने रहा हूँ साइंस स्ट्रीम में, सिर्फ 1 महीने. आई कैन प्राउडली से दैट 1 महीने मैंने पढ़ा, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं फिर कॉमर्स में आ गया. सो दैट इज द थिंग कि यू हैव टू रियलाइज एट एज सून एज इट इज पॉसिबल. आपने एक अटेम्प्ट दिया,
यू ट्राइड योर बेस्ट, ठीक है, कोई कमी आपने नहीं छोड़ी, नहीं हो रहा, शिफ्ट टू एन अदर थिंग। आप अगर उस पर स्टिक रह जाओगे ना तो आपका, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एज भी निकल जाएंगे, मे बी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी निकल जाए, एंड देन यू सी यू आर लेफ्ट नो वेयर। आपके दोस्त कहाँ पे पहुंच गए हैं, फिर देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि काश मैंने, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग रिग्रेट्स, काश मैंने ये कर लिया होता, इसके साथ ये कर लिया होता, पेरेंट्स की नहीं सुनी होती, खुद की सुनी होती, एंड देन यू विल स्टार्ट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन योर फैमिली कि आपकी वजह से यू विल स्टार्ट शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो डालनी है ना, अगर हम खुद पे नहीं ले रहे हैं। तो देन ऑल ड्रामाज हैपन। तो टाइमली अगर किसी को पता चल जाता है कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू करेज। करेज होना चाहिए टू एक्सेप्ट कि ठीक है, मतलब कुछ चीजें हैं, आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट, एंड देन शिफ्ट टुवर्ड्स अदर थिंग। बिकॉज अगर आप मानोगे नहीं, नहीं नहीं मैं तो करके रहूंगा, मैं तो करके रहूंगा, बिकॉज देयर इज अ कोट ना, नेवर क्विट। Yeah, exactly. आई वुड नॉट से कि वो कोट जिसने भी बनाया वो क्या सोच के बनाया, दैट इज, मतलब दैट इज अ गुड थिंग, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा सोच के बनाया होगा, बट उसको जो इंटरप्रेट किया गया, दैट हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। नेवर क्विट मतलब हो गया कभी क्विट ही मत करो। अब जस्ट जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल कि मान लो किसी के अटेम्प्ट खत्म हो गए नीट के, Uh-huh. अब उसके सामने वो कोट लेके जाओ नेवर क्विट, तो वो क्या, वो सेवेंथ अटेम्प्ट लाए कहां से अगर वो क्विट ना भी करे। तो अल्टीमेटली हमें टाइमली पता होना चाहिए कि वी आर नॉट फिट फॉर दिस पार्ट, लेट्स मूव टू द अदर पार्ट, एंड देखते हैं। एंड यार लाइफ इज वेरी एक्सपेंसिव। हम ये जो सोचते हैं ना, इन ट्वेंटीज, इन मिड ट्वेंटीज, लेट ट्वेंटीज के, अब यार अब तो एज निकल गई, पहले करते तो कर लेते, दैट इज अ Exactly. वेरी रॉन्ग नोशन पीपल हैव सेड कि सेटल हो जाओ, ये कर लो, कुछ नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो इफ यू नो टाइमली कि मेरे से ये नहीं हो रहा, आई गेव माई बेस्ट बट फिर भी नहीं हुआ, शिफ्ट। तो देयर शुड, मतलब इसके लिए एक बहुत ही चेंज चाहिए, एक माइंड से एक स्ट्रॉन्ग चेंज चाहिए माइंडसेट में, दैट इज रिक्वायर्ड। Yes, yes, that was really a well great piece of advice, I would say. Anything you want to ask, Sujal? No, I think our cups are filled up to the brim with the insights that you have shared with us. So I think with that, it brings us to an end to this episode. Actually, Ayush and I don't feel like bringing this conversation to an end because it's so natural conversation that's coming out between amongst three of us. Mm. But obviously, we'll have to bring us this to an end. So we were very delighted and grateful to you, Utkarsh, for joining us Yes, yes. today here at the Transformation Tapes. And I hope our audience also got to get some great insights that you shared, whether it's about internship, doing MBA, corporate life, whatever it is. I think you shared Yes, yes. everything, right? So that was a And pretty good honestly, conversation that we had today. it was really very nice talking to you. The way you answered, your humbleness. I think if we were to talk with you in an offline mode, or let's say you are our age as a friend, I think you will be a very nice person to be with. To be very honest. And we can do one thing, yeah. We can do one thing. As soon as we shift this podcast series from an online to offline mode, we can invite him again as well in an offline manner. So that is one thing we We'll can see do. upon that. That was really nice, man. The way you answered, Thanks. your smile, your humbleness. I think Thank you so much. Thank you good, so good. much for your kindness. I would just like to wish you both all the best. The work that you are doing, Mhm. the initiative that you have taken, the the way that you are framing the question, the way that you are posing the question. Keep the uniqueness of this podcast, and keep smiling, keep growing, and all the very best. And I'm always there to help you both. Thank you, thank Thanks you, a lot. thank you for being Thank there. you. Thank you. Thank you so much. This was all for the conversation that we had today with in this episode with Mr. Utkarsh Kushwaha, our today's guest. So I hope you liked the conversation that we three had, isn't it? And I hope you got all the answers to the questions that you had revolving around in your mind. And if at any point in the time throughout the podcast, first of all, I hope that you watched the whole podcast. So throughout the podcast, if you had any criticism to any point that Utkarsh provided or any point that we all three provided to you as an audience, you can just comment them below. If you have another perspective towards what we have discussed below, you can totally comment them down below because we are totally open to criticism. And that is what our transformation takes is all about. And at the same time, we hope that this conversation has added value to your growth. And if you haven't checked our previous episode, do check out that as well. At the same time, if you're looking for more such insightful conversation in the future, do subscribe our channel. So till then, thank you for joining us. See you on the other side of the next episode.